का बोला नसेल तर काय होणार असं ते नावाचं सांगतो YouTube फोन करून सांगतात आहे रे स्क्रीन कास्ट ऑप्शन आहे. Hello. All of you are about to receive a link on which you are supposed to fill in that information also. Meanwhile, there are around 70 students who are waiting for the link website, and we are about to go for the streaming on YouTube. That is why I request please bear some time. We are making it, and then once we are done with, please start the session. Madam, share link. Yeah, please check. Registration link is there. Online registration is there. So please make sure that again you are filling the correct details. Huh? Ready with the YouTube link. So at the same time, whatever is going on in this hall will be broadcasted up above for the remaining students. 170 students are there with us. 100 are here and almost 70 are up above. That is why it took time. Now we pick. Done. Please check now. You will receive a link from Amruta madam. You are receiving a link. Please check. Send. Hello, madam. You perhaps have received the link. Please open it up, fill in the details. If you have any doubt about any field, please ask. Our teachers are there to help you out. Volunteers are there to help you out. Please do it fast. Yeah, please do it fast.
चार्जिंग को लगाया मैंने एनर्जी सेवर पे लगाया है वाईफाई एनर्जी सेवर से हटाता हूँ इसको हाँ हाँ वो एक और चीज हुई है मैंने एनर्जी एक कर देंगे पर मैं जो उथलान है ना चल रहा है एनरोलमेंट नंबर म्हणजेच पीआरएस नंबर आहे ना तुमचा एनरोलमेंट नंबर असतो तोच पीआरएस नंबर आहे ऐकलं का एनरोलमेंट नंबर म्हणजेच पीआरएस आहे PRN number is your enrollment ID given by MSPT. That is unique ID from MSPT. PRN usually is for students and for diploma students it is enrollment number given by MSPT. almost all students have filled in. Some copy Okay, please pay attention here. Am I audible in the back? पीछे मेरी आवाज आ रही है पीछे? So before I jump into the topics, let me explain you about the program, about the future skills planning program. Okay, so future skills planning program is a joint initiative by MIT, which is Ministry of Information and Electronics Technology, and NASCOM for upscaling and reskilling of non-IT or IT manpower in emerging technologies. So emerging technologies are the artificial intelligence, cybersecurity, big data analysis. So these kind of technologies are covered inside this FS9 program. The main objective of this program is to basically people who are working already to reskill them, or students or college students or freshers to skill them with this information about these emerging technologies, so that they can use the knowledge in their day-to-day work as well as in their offices. So under this, 3 courses are there. 2 courses are for government officials and 1 is the BootCamp, under which we are conducting this here in your college. So BootCamp is, the main objective of this BootCamp is to basically give you an understanding of what is artificial intelligence, along with in a way that you can use those knowledge, those understanding to develop practical skills. So for that also we have hands-on sessions. Okay. Then we have it is 40 hours course, so 20 hours theory and 20 hours lab. And upon so what are the learning outcomes of this course is, upon successful completion of this course,
you will be able to understand basic principles of artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Along with that, you will have awareness of the current advancement in the field of artificial intelligence. And by the end of this bootcamp, you will be able to write a program in Python for basic ML and deep learning program. So this is the brochure that was shared with your college, and I think it was shared with you also. So the things are mentioned in there. Now some of the important parts of theory session, 20 hours theory sessions will be there, which are spread out in total 5 days. Then you have lab sessions also, again 20 hours lab sessions along with the theory sessions. Then we will have a mock assessment to give you an idea of what your final theory assessment is going to be. Then lab assignments are there. So daily one assignment is there which you have to do. Along with that, attendance. आपको the principal already mentioned earlier कि 90% attendance should be there. 100% is required, but up to 90% is also fine. But please make sure you are there to attend these sessions all the 5 days. Then at the end, on the final day, that is on the 5th day, on Friday, we will have our theory assessment, which will be an MCQ type quiz. 30 questions would be there, 40 marks, or 40 marks, total 40 marks would be there. Apart from that, final lab assessment would be there. The problem statement will be shared tomorrow or on Wednesday, and you have to do it in groups. Groups will be assigned, or you can choose the group on your own. And after the completion, overall, and the assignments that I said, so total 4 daily assignments are there. You have to submit those assignments. Based on those assignments, you will get that's 20 internal marks. So 20 internal marks, 40 is your for lab assessment, and 40 is for your theory assessment. So total 100 marks. After so these are there, and one more thing, minimum 40% overall out of 100. If you score more than 40, you are passed. You will get a certificate and a scorecard. Apart from that, if you score more than 95% pass, you will get an additional certificate of excellence. So as I said, marks allocated. Theory exam 40 marks, practical exam 40 marks. Then internal assessment 20 marks, so total 100 marks. The dates are on here. So this is older. I have not corrected this. So today is 21st July. So 21st July is the starting date, 25th July is the end date of the course. Mock assessment we will share by 23rd or 24th on 24th morning. Then lab assessment submission date accordingly would be by the end of the week. Okay. Then theory assessment. So by Friday night you have to submit the lab assessment, and theory assessment will be on 25th. The team at CDEC, Future Skills by AI team at CDEC is Mr. Suresh Sikka is the CI, Chief Investigator. Ms. Harsha Deshpande is the Co-Chief Investigator. Then Mr. Sandeep Sahane is the Head of Lead Resource Center, basically. He is involved in the AI technology. CDAC Pune is the Head Resource Center, so Lead Resource Center, so he is there. Okay. Then Ms. Vaishali Jain is the course coordinator.
myself, Maulik there is one faculty, and then Mr. SAlunkhe is another faculty. So this is the brief introduction about the course. So before I start, so I'm going to start with the brief overview of what is artificial intelligence. But before I start, I want to know from you, what do you understand by the term artificial intelligence? आप लोग artificial intelligence से क्या समझते हैं? Artificial intelligence gives machine a capability to think like the human, but go beyond human capabilities. Okay. So what that? Anyone else? आप लोगों ने ये टर्म तो भी बहुत सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Okay. What do you understand by term intelligence? Intelligence को क्या होता है? कभी ये सोचा है हमारा दिमाग कैसे काम करता है? See, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे में जो आइडिया है वो यही है, हाउ टू मिमिक दिस ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इन अ मशीन. सो इंटेलिजेंस मतलब इन द सेंस, इफ यू थिंक अबाउट, अगर आप सोचोगे ब्रेन के बारे में हाउ इट वर्क्स, सो 5 सेंसेस हैं हमारे: टेस्ट, आईज, फिंगर टिप्स, सेंस करके या स्मेल करके या टेस्ट करके या सुन के, ऑल दोस. सो ब्रेन जो ये पांचों सेंसेस से डेटा कलेक्ट करता है. किसी हर सिनेरियो में डे बाय डे आप जो यू आर लिविंग, ब्रेन इज कलेक्टिंग द डेटा. अगर कुछ नया होता है तो वो उसको स्टोर करता है, नहीं तो अगर जो रूटीन है तो ऑलरेडी रूटीन उसके पास एक सेव है which it does not know. So now suppose अगर आप किसी एक्सीडेंट में, then within seconds और उससे भी कम टाइम आपका जो ब्रेन इतना फास्ट वर्क करता है, it finds out अगर आपका कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस हुआ पहले भी, अगर आप किसी एक्सीडेंट में हो या दिस इज फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम है तो रियल टाइम में वो फाइंड आउट करता है कि क्या किया जा सकता है, एनालाइज करके डेटा जो है उसमें कैसे किया, उससे एनालाइज करके इट फाइंड्स आउट व्हाट एक्शन टू बी टेकन, देन इट टेक्स एक्शन. और अगर पहले में हुआ है ऐसा तो उस सिनेरियो में क्या एक्शन लिया था और क्या फैक्टर्स अलग हैं अभी के करंट सिनेरियो से, दोनों को कंपेयर करके देन इट ट्विक्स द प्रीवियस एक्शन एंड टेक्स दैट एक्शन. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? In artificial intelligence is basically machine data, past data के basis पे analyze करके past data को
वो action predict कर रहा है कि क्या action है, and based on and performs that action. So artificial intelligence, the term was coined by this guy, whose name was Professor John McCarthy, and he gave the definition of artificial intelligence as science and engineering of making intelligent machines. Intelligent machines which can mimic them. Now there are other definitions also of AI, like the science of programming computers to learn from data, or making a system to learn from past data. So past data may be, or other real-time data is a real-time data maybe it can learn from. Or another definition is a field of study that focuses on developing technologies that allow machines to perform tasks that are typically associated with humans. जैसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री में काम कर रहे किसी मशीन पे, so you can automate that with the help of artificial intelligence. Yeah, any human task related to teaching also, वो AI कर सकता है. आप उसको डेटा दे दो, पास डेटा या जो भी उसको पढ़ाना है उससे रिलेटेड डेटा वो कहाँ से एक्सेस कर सकता है, सो इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है वहाँ से वो आपको he can or it can teach you. So there are a lot of applications of AI, but let's quickly go through the history of AI. So AI is really not new. So starting from 1921, the first time robot term was used in a Czech play called Mozart's Universal Robots. This play introduced the idea of artificial being. Robots पता है ना सबका, सबने मूवी में देखे हुए robot. Okay. Then in 1929, a Japanese professor built the first Japanese robot named Gaku Tenso. Then in 1949, computer scientist Edmund Calisper published a book with the title Giant Brains of Machines That Think, which compared the newer models of computer with human brains. So, पहला कंप्यूटर जो था, पता है? When was the first computer created? Any idea? During World War II, Alan Turing, नाम सुना है? Alan Turing नाम सुना? Okay. During World War II, Alan Turing, जो कि British scientist था, he created the computer to break the code of German messages. उस कंप्यूटर का नाम था एनिग्मा. So it was around the same time. Before this, 1945 came around, first computer came. Next, in 1950, Alan Turing published Computer Machinery and Intelligence, a proposed test. He basically proposed a test of machine intelligence called the imitation game. So, or Turing test. ये Turing test जो है अभी भी यूज होता है, but they have made changes as the technology evolved, as the world evolved. So they have modified the Turing test, but basic idea Turing test का यही है कि आपके पास दोनों पर्दे से covered है, आपको and there is a environment and you do not know कि रूम में robot है या computer system है या human.
इवैल्यूएटर आएगा, दोनों रूम में पर्दे के एक साइड से क्वेश्चन पूछेगा, उसको नहीं पता है कि पर्दे के दूसरे साइड कौन है, वो दोनों रूम में क्वेश्चन पूछेगा, एंड इफ द इवैल्यूएटर is not able to distinguish between the answers of both, then और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि दोनों रूम में ह्यूमंस थे, then मशीन ने इवैल्यूएटर को फोन कर दिया thinking that it is a human. So that machine is said to be artificially intelligent. That is what your imitation game is or Turing test is. Then in 1952, computer scientist Arthur Samuel developed a program to play checkers, which is the first ever learn the game independently. Checkers के ना generally जब अगर आप चेस बोर्ड खरीदते हो तो या उसमें पीछे चेकर्स है, if you have seen. Then in 1955, Professor John McCarthy coined the term artificial intelligence during a workshop held at Dartmouth College. Where he termed the coined the term मतलब first time उन्होंने use किया था, उन्होंने कहा था that is artificial intelligence. After that, research started होने लगी. Then in 1958, John McCarthy himself created a programming language called Lisp, जो अभी भी use होती है, but it is not quite popular. So Lisp का full form है Lisp processing, and it is the first programming language for AI research. So till C++ came into picture, Lisp was being used. Lisp use हो गई. So 1959 में Arthur Samuel created the term machine learning. Then in 1961 we had the first industrial robot Unimate, and it was used on the manufacturing line in General Motors, car की company है USA. There it was used to transport die casings and moving parts on cars, जो humans के लिए dangerous consider होते हैं कि it is very high temperature पे welding कर रहा गाड़ी में, तो that is considered at the very high temperatures, so it is being too dangerous for humans. That's why वहाँ पे humans को replace करने के लिए robot use हुआ था first time, that is Unimate. Then in 1966 first chatbot, पहले काम chatbot था, फिर later on it changed to chatbot. Now with the invention of ChatGPT पता होगा सबको, so it is replaced by conversation. So first chatbot was Eliza, a mock psychotherapist. वहाँ पे reputation ये थी कि क्या questions वो पूछ सकता है और क्या answers वो देगा, that is already fixed. So you just give the question and it will give you an answer. Then in 1968, a Soviet mathematician published a paper called Group Method of Data Handling in the journal Acromatica, जो के basis बना deep learning के mathematics. Then in 1979, the American Association of Artificial Intelligence, which later became Association for the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI, was formed. Then in 1980, from 1980 to 1992, it is even here. So in 1980, first conference was held of AAAI. Same year, first expert system came into the commercial market. It was named XCOM. उसका purpose ये था XCOM का to help you with buying computer. पहले कंप्यूटर आपके इतने छोटे जो कि आपके सामने डेस्कटॉप ऐसे नहीं होते. And in those times, computer used to be housed in its own building.
आप सुबह जाते थे, पंच कार्ड होता था, उसमें आपको जो इनपुट देना, जो प्रोग्राम आपको रन करना, वो सब इंफॉर्मेशन देते थे। वहाँ ऑपरेटर रहता था, वो कंप्यूटर में वो पंच करता था, उसके बाद आप दिन भर भूल जाते थे, फिर शाम में आप जाते थे, तब तक आपका वो आउटपुट जनरेट कर देता था। So it was slow, it was big. So XCOM helps to basically or assist in ordering of computer systems by automatically picking component. आजकल तो आप Amazon पे जाते हो, उसके बाद PC है या लैपटॉप है, उसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह चेक करते हो, then you use that, buy that. So वही काम स्पेसिफिकेशन आपके नीड्स के अकॉर्डिंग क्या कंपोनेंट लगेंगे, वो एक्स आपको उसमें लिस्ट करता है। Then in 1981 जापानीज गवर्नमेंट ने फिफ्थ जनरेशन प्रोजेक्ट पे, कंप्यूटर प्रोजेक्ट पे $850 मिलियन इन्वेस्ट किए और एलोकेट किए, which is currently over $2 billion in current money. और उसका एम था एआई फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट basically. Then in 1985, an autonomous drawing program known as ERA is demonstrated at the Triple conference. Then in 1986, Ernest Friedman and his team at the Buddhist University of Munich created and demonstrated the first driverless car or self-driving car. अभी वर्ल्ड में सेल्फ ड्राइविंग कार किसकी है? यस, टेस्ला, इंडिया में भी आ गई है। बट इन 1986 इट वाज द फर्स्ट ड्राइवरलेस कार और उसका लिमिटेशन ये था कि ऑन एम्प्टी रोड, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई पेडेस्ट्रियन नहीं है, कोई और दूसरी गाड़ी नहीं है, in an empty road it can go up to 55 miles per hour. Before I move on, few things are necessary. So 1983 में C++ लॉन्च हुई। 83 में C++ लॉन्च होने के बाद 83 में जब C++ लॉन्च हुआ, then उसके बाद जो लिस्ट, उससे पहले जो C++ से पहले हार्डवेयर वगैरह लिस्ट यूज कर रहे थे, बट आफ्टर द लॉन्च ऑफ C++ एंड टिल नाउ जो भी हार्डवेयर है आपका वो C++ बेस्ड है, मीनिंग यूजिंग C++ आप हार्डवेयर से कनेक्ट कर सकते हो। Even though C++ is a high level language, but using C++ you can interact with the hardware. और अभी भी जो हार्डवेयर है वो C++ बेस्ड नहीं है। Apart from that, during that period in the 80s, even though advancements were there, but जो core research थी, it was not giving any fruitful result. So some places उस decade को AI winter भी कहते हैं। Okay. Now in 1991, two things happen. सबसे पहले आपका वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ, इंटरनेट आया, एंड सेकंड पाइथन वाज लॉन्च्ड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इट इज बेस्ड ऑन C++। मतलब पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं या जो भी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटीज वगैरह हैं वो C++ का बैकग्राउंड में यूज करती है। And one more thing, till
even in today's world, C++ is the fastest language in terms of execution. ठीक है? So Python में 91 में आया, आपका इंटरनेट में 91 में आया, and after that AI research ने जो स्पीड पकड़ी है, till now it hasn't stopped. A lot of advancement has happened in last 30 years, 30 to 35 years in the field of AI. So, in 1997, it was developed by IBM and it is an AI. It was able to defeat the then chess champion Garry Kasparov in a highly publicized match. Meaning, वो live मैच हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टीवी पे. उस मैच में Deep Blue beat Garry Kasparov, जो कि उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन थे. Then in 2000, Professor Cynthia Brazil developed the first robot that could simulate human emotions. उस robot का नाम था किसने? वो जैसे आपके इमोटिकॉन्स हैं, उनमें इमोटिकॉन्स होते हैं ना, तो वो चीज it shows on with its face, include eyes, eyebrows, mouth, and ears. Then 2003 में नासा का मार्स मिशन हुआ था, उसमें भी AI का यूज हुआ था to navigate the surface of the planet. Then from 2006, your companies, social media companies like Twitter, which is now known as X, Facebook, and another OTT companies like Netflix started utilizing AI as a part of their advertising and user experience. अभी भी यूज करते हैं. Then in 2010, Microsoft ने अपना Xbox 360 Kinect निकाला था, using which it was the first gaming hardware designed to track body movement and translate it to directions. Gaming direction. आप लोगों ने वो ऐड देखी होगी कि स्टिक पकड़ के टेनिस खेल रहे हैं या स्कीइंग कर रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं. That is first happened in Xbox 360 Kinect. Then in 2011, Apple released Siri, first virtual assistant. So chatbot, then virtual assistant, and then conversational AI. Now from 2012, so 2012 में two researchers from Google, Jeff Dean and Andrew Ng. Andrew Ng is a quite famous name in the field of AI, training a neural network to recognize cats by showing it unlabeled images and no background information. Okay. Then in 2016, Hanson Robotics created a humanoid robot named Savior, who became the first robot citizen. ये Saudi Arabia के citizen, first robot citizen, and it was created with a realistic human appearance and the ability to see and replicate emotions. Then 2018 में Alibaba ने language processing AI बनाया, which beat human intellect on a Stanford reading and comprehension test. Then in 2019, Google success star reached Grandmaster on the video game StarCraft, outperforming all but 0.2% of human players. 2020 में OpenAI ने GPT-3 का बीटा लॉन्च किया था, बीटा टेस्टिंग की थी. Now you use the GPT-4 mini model
in ChatGPT. Then 2021 में OpenAI developed Dolly. वो basically, if you give an image, you can process the image and give you information of what is happening in the image. Or if you want to give a caption to that image, it can give you that caption. And also, if you give some, if you want to create a, अगर आपको कोई image बनाना चाहते हो, तो उसके बारे में information दोगे तो Dolly will also create an image also. So this is the history of AI. 1991 में जब इंटरनेट आया तो उसके बाद से डेटा जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 80s नाउ हम डेटा की जब बात कर रहे हैं तो इट इज जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है इट इज नाउ साइज मेगाबाइट्स. सो टीवी से भी ज़्यादा डेटा हो गया है. Now we can store 1 TB to TB data easily on an external hard disk. Now different types of artificial intelligence based on two factors, based on capabilities, meaning what it can do, and based on functionality, meaning what it does. So based on capabilities, 3 types of AI are there: narrow AI, general AI, and super AI. So अभी तक जितना AI है, AI products हैं, they all come under narrow AI. They are able to mimic human intelligence, but not human emotions. कोई भी human AI product जो available है अभी market में, they are not able to mimic human emotions. General AI would be those AI which can be able to mimic human intelligence as well as human emotions. Then you have super AI. Super AI में basically the AI will become self-aware. So you human intelligence और human emotions को mimic कर ही पाएगा. उसके अलावा it is going to be self-aware. मतलब वो अपने decisions को it will not require any human intervention. If the human is good, zero नहीं. Then based on functionality, what the AI is doing. So first of all, the active machine. So suppose आपको पास data है all car के prices of this along with the information of the different cars, कितने सीटर है, कितना माइलेज है, कितना चली है, रीसेल है कि फर्स्ट टाइम सेल है, all that information is there. And what you want is you give a new car detail and it would be able to predict what should be the price of that car. So that is a reactive machine. So learn किया है, now you give a new input and it will be able to predict instantly. So it is just reactive. So that's why the name reactive machine. Then we have limited memory. Limited memory का example यहाँ पे driverless. Driverless कैसे type of car है? What happens basically आपके कार में sensors लगे होते हैं along with cameras जो road के photos capture करते हैं. Because पूरा रोड एनवायरनमेंट एनालाइज करना है कि रोड पे क्या हो रहा है, पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं या गाड़ी आ रही है पीछे से या आगे से गाड़ी आ रही है या देयर इज अ स्पीड है या कुछ और जो भी आगे कुछ और इशू है. सो वो कैमरा से भी कैप्चर होना है. देन सेंसर से भी कितनी दूर है, अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही तो हाउ फार दैट कार इज. बेस्ड ऑन द सेंसर डेटा you can calculate the distance और साथ में how far the car is ताकि वो सबसे distance बना के चलती रहे. So all that data is there. Now it stores it for limited time and there is a limited storage in the car. Storage device. आप ज़्यादा बड़ा storage नहीं रख सकते. If you store lot of data, उसके लिए आपको storage device जो ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी. उसके वजह से आपके कार का weight बढ़ेगा.
which will automatically reduce the speed of the car. So small amount of data is, or limited amount of data is stored for a limited period of time. जब पहला obstacle cross हो गया, then it will remove the all the information, but it will just get the information कि क्या issue था and what action was taken. The rest of the data, sensor data, it will remove and then it will collect the same data again for the next step. Like this, your self-driving car works. So that is an example of limited memory. Then comes theory of mind. So theory of mind, basically, your AI will be able to mimic human emotions along with human intelligence. So human emotions, so which makes this theory of mind or आपका general AI are the same thing, the same capabilities पे मतलब what it can do and दूसरा what it is not. There is no functionality. And then the last is again self-aware. So self-awareness AI is again similar to super AI, where your AI is going to be uh, basically going to be able to mimic human emotion as well as human intelligence, along with it will be able to make its own decision. So the experts in traffic, industry giants, and they fear AI for this reason only. When AI will become super aware, it is going to be you as humans as useless. So वहीं से सबका fear आता है. Then we have AI versus ML versus human. So artificial intelligence, machine learning, and deep learning. So starting with artificial intelligence, a technique which enables machines to mimic human behavior. Then machine learning is a subset of artificial intelligence and it contains algorithms which use statistical methods to enable machines to improve with experience. Okay, then we have deep learning. Deep learning is a subset of machine learning, but it uses something called neural network, multi-layer neural network. You will see detail when we cover the overview of deep learning, what is neural network and what is deep learning. But for now, understand this is a neural network there. If you remember your 9th biology, उसमें आपने न्यूरल सिस्टम पढ़ा होगा अपना बॉडी में. हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम होता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं. So if you are sensing something, so from that tip through the neurons, the data is transferred to your spinal cord. In spinal cord के बाद data goes to brain. So वही चीज को मिमिक करने के लिए machines में we made neural network. So उसमें भी जो basic unit है neural network में, that is also called neuron or perceptron. So let's see machine learning. So as I said, it is an application or subset of AI, and it is allowed to make decisions from data from basically past data. So suppose आप गाड़ी खरीदने गए या आपको you are making a product for car price prediction. So आपने data collect किया कार कौन सी गाड़ी कितने में बिकी है. You collected those data from the different showrooms around the city. उनके पास सारा डेटा होगा कि कौन सी गाड़ी थी, उसमें क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या एक्स्ट्रा अलग से क्या क्या फीचर्स थे. Every information will be there along with the car price.
तो आप जब मशीन को ट्रेन करते हो तो वो पास मशीन लर्निंग में you give that past data, you have that data. Now मशीन ने उस डेटा में पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि क्या पैटर्न है, and based on that pattern it will learn what prediction should be made. Now जब आपने उसमें एक न्यू डेटा भरा गाड़ी से रिलेटेड, किसी भी गाड़ी का आपने जैसे किसी गाड़ी का नया मॉडल है उसके बाद तो आपने उसका इंफॉर्मेशन मिला कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, कितना माइलेज है, और दैट इंफॉर्मेशन यू फिट इट विल गिव यू what is going to be the price of that car. So that is how your machine learning in general works. Apart from that, at time it is not necessary कि आपके पास वो information मिला car price का. So जैसे for example आपका you have to find out कि किस एरिया में ज़्यादा क्राइम है, उसमें आपके पास डेटा क्या होगा, एरिया वाइज पुराना डेटा क्या होगा, एरिया वाइज कितना क्राइम होगा और कौन सा टाइप का क्राइम. सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. अब अगर मैं किसी नए एरिया में जाऊँ तो उसमें कितना क्राइम हो सकता है. सो उस केस में देयर इज नो लेवल्स. जो जैसे कार प्राइस के केस में आपको पुरानी गाड़ी का कार प्राइसेस पता है, बट इस केस में आपको वो बेसिकली टोटल क्राइम या कुछ भी लाइक दैट इज नॉट नो. कि क्या प्रेडिक्ट करना है इज नॉट नो. बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो सकता है. सो उस केस में आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड क्लस्टरिंग. और better example we will see. Then we have deep learning. So as I said, specific subfield of machine learning and it uses neural network. So ये नीचे diagram है, that is for a diagram of a neural network. उसमें जो एक एक सर्कल आपको दिखा है that is called a neuron. So in तीन टाइप के लेयर हैं, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, डेटा लेयर. So data is getting processed starting from the input layer up to the output layer. Output layer में आपका prediction होगा. So deep learning was based on large data set. Large data है आपके पास, more than 10,000 rows है data में. Then there you can use deep learning. Machine learning जो है आपका structured data set के लिए, structured data के लिए और smaller size data के लिए use होता है. Structured मतलब टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा है, जैसे आपके एक्सेल शीट वगैरह में, सीएसवी में, या आपका डेटाबेस वगैरह में जो है रिलेशनल स्कीमा वगैरह. डेटाबेस पढ़ा है, डेटाबेस पढ़ा है, डेटाबेस में रिलेशनल स्कीमा वगैरह पढ़ा होगा. तो अगर वो फॉर्म में डेटा है, यू कैन यूज मशीन लर्निंग एज वेल एज डीप लर्निंग. बट डीप लर्निंग के लिए लार्जर डेटा सेट when it works the best. Since it is working on large data set and unstructured, so unstructured data क्या होता है, basically आपका सोशल मीडिया का डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह हो गया या इमेजेस वगैरह हो, that is your unstructured data. So उसपे आपका deep learning works best. So since it is working on large data set and
unstructured data, it requires large computing power. A lot of processing is there. Now, what are the current trends in artificial intelligence? Starting with generative AI. जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी, वो जो what it is doing basically आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, it is generating the answer for that based on the data जो उसने इंटरनेट से लिया उसको ट्रेन किया गया है. So इंटरनेट का जितना डेटा है जो फ्रीली अवेलेबल है उस पे it is being trained on. Then you have multimodal AI. Multimodal AI में basically यहाँ E नहीं होगा मॉडल, it would be A instead of. So multimodal AI basically what we are doing is we are getting outputs in more than one types. Basically, अगर आपने text में input दिया है तो you can get text output as well as your image output or video. So एक से ज़्यादा मोड में आपका output generate होगा. So that is called multimodal. So chat GPT में होता है text के अलावा image भी generate कर सकते हो chat GPT. So it is an example of multimodal AI. Then you have explainable AI. Explainable AI is basically AI which is able to explain its decision making process. मतलब इस now जो मैंने properties की बात की कारक्रेस prediction में जो feature गाड़ी की specifics है या that type of information, those are called features. So explainable AI basically if your AI is able to explain its decision making process based on कि कौन सा फीचर उसने इम्पोर्टेंस समझा प्रेडिक्शन देने के लिए, किस पे ज़्यादा फोकस किया, क्यों किया, what was the reasoning behind that. अगर ये सब आपका AI explain कर देता है, then that is called explainable AI. Then you have automated machine learning. So जो machine learning का जो process है, we can automate it. So वो आपको automated machine learning है. So there are Python libraries which give you these options. Then you have edge AI. Edge AI में दो concept हैं, edge computing and artificial intelligence. Edge computing का basically मतलब ये you want to set up your system in a remote location, not connected to the internet. Not connected to the internet. Remotely आप set up करना चाहते हो without access to the internet. Then it is called edge computing. Generally वो एरिया है जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँच सकता, जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गया या कंट्रीज हैं कुछ where so जहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुँच सकती, so उन एरियाज में you use the concept of edge computing to provide that information. Along with अगर उसमें आप AI ऐड कर दो, artificial intelligence वगैरह apply product apply कर दो ऐसे situation, then it is called edge AI. So using the concept of both edge computing as well as artificial intelligence. Then you have ethical AI. Ethical AI basically apart from data safety and data privacy, if AI follows human moral ethics values, then it is called ethical AI. और जब से generative AI आया, ethical AI और explainable AI की बातें और बढ़ी और discussions और बढ़ी. So we will cover ethical AI, explainable AI on the last day, what it is. Now chat GPT. So it is developed by OpenAI
and it was launched in November 2022. At that time, the model it was using was GPT-3, but now it uses GPT-4 mainly for free subscription, paid daily or advanced model to that. And it uses both supervised and unsupervised. The supervised reinforcement method. We will discuss that what is supervised learning, what is reinforcement learning. Then tomorrow we will go through machine learning. So right now just remember supervised and reinforcement learning. Now applications of AI in different areas. So starting with healthcare, rare disease diagnostics and treatment, cancer related diagnosis के लिए it has been quite largely used. Based on the X-rays and the MRIs of the tumors, you can analyze those tumors with the help of artificial intelligence and identify if that those tumors are life-threatening or not. और भी अलग-अलग एरियाज में अलग-अलग कॉमन डिजीज डायग्नोसिस के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपके पास सिम्टम्स होते हैं या टेस्ट उसके लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसके रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर कुछ डायग्नोसिस करता है। सो टेस्ट रिजल्ट आपके पास है, उसका डेटा है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट एन एआई व्हिच कैन मेक डायग्नोसिस एंड also suggest treatment for that. Similarly, you have virtual nursing assistants where, as per the because a lot of medical equipments have become digital, so cyber security का भी you can create with AI. AI robot assisted surgery are there. So India में बहुत कम hospitals में है. Robot assisted है, AI robot assisted तो I think India में भी नहीं है. But in other countries, in US and all, there is AI robot assisted. Health monitoring and wearables. Apple Watch या Fitbit वगैरह, so that it shows your heartbeat and all information. So उसके लिए भी आप AI यूज कर सकते हैं. Then personalized healthcare plans, drug development में, dosage level reduction में, for all these applications you can use artificial intelligence. Then in the field of banking and finance, so in banking and finance also you can use artificial intelligence. So सबसे पहले credit card and loan decisions. बैंक के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कितने लोगों को लोन दिया है, लोन नहीं दिया है, जिनको लोन दिया उनमें से कितने लोगों ने लोन का पेमेंट पे डिफॉल्ट किया, मतलब पेमेंट टाइम पे नहीं किया, ईएमआई टाइम पे नहीं भरा है, या कितना टाइम पे भरा है. So all that information and their information is there with the card. So अगर कोई नया कस्टमर लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है based on the last data, बैंक can use AI to decide to give the loan. Similar to credit card का भी same process है. Then for process automation, बैंक में जो भी process है कुछ चीजों का उसको automate किया जा सकता है with the help of artificial intelligence. Then you have personalized banking. Okay. Actually, most of the banks have their own net banking. So AI का use करके वहाँ पे भी website पे भी AI का use किया जा सकता है to make it more personalized. Then anti-fraud system, risk management, you have sales forecasting. आपके पास previous sales का data है. Based on that, क्या improvement किया जा सकता है, वो सब आप identify कर सकते हो.
Then stock market prediction. कल stock market की क्या वैल्यू रहेगी वो कर सकते हो, लेकिन this stock market prediction is considered to be one of the most difficult problems in artificial intelligence. Because stock market is volatile है, based on one news or based on one paper, and the stock market will fluctuate. So that's why it is considered to be one of the most difficult AI problem. Then you have AI in e-commerce. Amazon वगैरह यूज किया होगा आप लोगों ने, Amazon Flipkart वगैरह. Amazon पे when you see a product के description उसके नीचे आता है people who want this also want this, or information आती है you can also buy this. So that is recommendations, which is again with the help of artificial intelligence. So personalized product recommendations. So आपका उसमें भी है Amazon वगैरह Flipkart में भी है. Then in on OTTs also you have recommendations. कि अगर आपने Netflix वगैरह पे आपके पास आता है because you have watched this particular series, so उसके basis पे recommendations होते हैं. या आपने जो genre की series ज़्यादा देखी उनके basis पे recommendations होते हैं. So that is all in using AI. E-commerce में हम और कर सकते हैं customer segmentation. किस एज ग्रुप के कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं तो उनको वही प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आएगा. Like that. Then intelligent demand forecasting. Based on the product's demand, this product की कितनी डिमांड, आगे क्या डिमांड हो, अभी करंटली है पास में कितनी डिमांड, उसके बेसिस पर आगे कितनी डिमांड बढ़ सकती है या कम हो सकती है. You can predict that. That comes under intelligent demand forecasting. Intelligent pricing. आपको अपना प्रोडक्ट Amazon पे डालना है. You can create an AI model or AI product which can compare the price of all the products in the same category or similar type of product. So आप analyze करके उससे ये पूछ सकते हो कि what should I keep the price of my product. So that is for intelligent pricing. Sometimes अगर आपने कहते हैं Uber वगैरह यूज किया है, उसमें कभी-कभी सर्च प्राइसिंग वगैरह जो होता है कि उस समय ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो वो प्राइस बढ़ा देता है ट्रेंड. So that is also comes under your intelligent pricing. Predator price monitoring हो गया, predict customer lifetime value. Based on कितना frequently कौन सा customer कितना frequently product आपकी साइट से खरीद रहा है, उसके बेसिस पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो how long he is or she is going to be the customer, और कितने लंबे समय तक वो कस्टमर रहेगा या छोड़ देगा बीच में. So you can calculate the customer lifetime value. Automated content generation, वो आपका आगे जनरेटिव AI प्रोडक्ट इमेज एनालिटिक्स. So comparison करते हो कि different products का, तो उसमें along with the specific उसमें क्या क्या difference, specification में क्या difference है, images भी show होती हैं आपको. So based on the images of the product, you can analyze each product. Then AI in agriculture. Crop yield product prediction and price forecast. जो फसल है उसकी कितनी फसल है अगले वेदर में, तो वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास पुराना सारा डेटा है कि लास्ट ईयर इस टाइम पे कितनी फसल हुई थी, उससे पिछले साल कितनी फसल हुई थी, उससे पिछले साल कितनी फसल हुई थी. सो वो इंफॉर्मेशन आपके पास है
So using that you can create an AI model तो आपको ये बताना है कि इस साल में हो सकती है या उस अगले साल में हो सकती है और साथ में प्राइस का भी इतना how much price was there कितने में बिकी थी बस लास्ट ईयर उससे पहले कितने में बिकी थी considering all the fact कि कितने फसल हुई थी वो सब मिला कर आपके पास डेटा है तो आप इस साल की वो भी प्राइस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं then intelligent spraying अगर आपने खेत में कैमरा वगैरह लगा दिए जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि खेत में कितना कहीं पर फसल में कीड़ा लग रहा है उससे उसी एरिया में आप कीटनाशक वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह डाल सिर्फ उसी एरिया में डालो ताकि पूरे फसल में वो ना फैले वहीं पर then predictive insights when is the right time to sow the seed बीज कब डालना चाहिए फसल कब काटनी चाहिए वो सब का इंफॉर्मेशन वगैरह उसके लिए भी आप एआई यूज कर सकते हो अभी तो शायद एक ऐप है किसान ऐप है शायद जिससे वो आप जो भी एक्सपर्ट है उनसे पूछ सकते हो कि कब फसल लगानी है यू कैन आस्क द क्वेरी then robots you can use autonomous robots for harvesting huge volumes of the crop जो यूएस में होता है क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग उसके सॉइल मॉनिटरिंग के लिए भी आप एआई यूज कर सकते हो then disease diagnosis कौन सा बीमारी लगी फसल में वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड देन अकॉर्डिंगली उसको कैसे हटाना है या खत्म करना है डिजीज को ट्रीट करना है वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये तो कुछ फील्ड्स हैं पर इफ यू एनी सेक्टर कोई भी फील्ड आप सोचो हर जगह एआई का कुछ ना कुछ यूज है एजुकेशन में भी है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन में भी सब पर जो सीखने की समझने की है अगर बेस्ड ऑन दैट सबके लिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन या आप क्रिएट कर सकते हैं सो जो जल्दी सीख रहा है उसके लिए जो इंक्रीजिंग लेवल है वो जल्दी करो इसको थोड़ा टाइम लगता है तो उसको धीरे धीरे करो सो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बट दिस वाज द जनरल ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके So now we will have our lunch break. Lunch break के बाद फिर we will start with Python. तुम्हाला लंच करून 7:115 सेकंड मध्ये तसे यायचं 1:15 सव्वा एक तसे यायचं दिखाते हैं पहले उसको स्ट्रीमिंग बंद कर एंड कर